Good morning, Namaskar. This is our Khalka. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat India on this day, September 1st, 2023, Friday. मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज दिनांक 1 सितंबर 2023 शुक्रवार सुबह के करीब करीब 3:24 3:34 a.m. just for record purpose. Quality, as usual, being title or concern, and you can say I have put some notes here. That's being very important one, and that is those citizens if cannot understand power of citizens in Bharat India, none can change this nation to be a power in world. One has to be qualitative to make Bharat India a world level community. वो देश के नागरिक हमारे जो समझते नहीं है कि सिटीजन की पावर क्या होती है, नागरिक की पावर क्या होती है भारत इंडिया में, वो इस देश को चेंज नहीं कर सकते, शक्ति नहीं बना सकते विश्व में। किसी भी नागरिक को गुणवत्ता रखनी होगी भारत की, समझने की कि हम लोग किस कम्युनिटी से हैं, ये समझना आवश्यक है, ज़रूरी है। और यदि हम ये नहीं समझते तो हम कुछ भी नहीं समझते। हम संविधान की भी बात करेंगे कुछ हद तक, और हम ये बात भी करेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। बात रही क्वालिटी की, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सभी के लिए। आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ इस यूट्यूब में। प्रॉब्लम ये है, भारत इंडिया स्पीक्स अबाउट Bharat India speaks about real quality and real coordination. I again say real quality and real coordination. Real means vastavik, quality means gunavatta, vastavik coordination or vastavik samanvay. Real quality and real coordination. Quality exists nowhere currently. Systems have lost quality. Works have lost quality. Individuals have lost quality. Coordination does not exist, and therefore it has lost existence of quality of performance. Mere talks cannot serve purpose, but exclusively positive inclination of performance for quality. Coordination has been missing for long. Constitution of India Article 51A and quality, as we discussed before. How many of us have been following these fundamental duties? That is a wonderful question. Again, I say, how many of our people have been following these fundamental duties? Are our leaders, or we can say our leaders of various political parties and other professionals, as well as industrial leaders, following these duties? And if they do not follow, why? What is the reason? Our constitution is very clear. An article in part 4A of this document, which includes Article 51A, that is part 4A of Constitution. Again, I say Article 51A that mandates and defines fundamental duties which are very significant for everybody. Because I'm talking about quality of citizen, this means fundamental rights and fundamental duties are very important. Let us concentrate on fundamental duties first. हमको ड्यूटीज पहले करनी है, अपना कर्तव्य पहले निभाना है अपने अधिकार मांगने से, क्योंकि पहले कर्तव्य है, कर्म है, उसके बाद ही तो अधिकार मिलेगा। इसमें सिंपली लिखा है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के हर नागरिक का एक कर्तव्य होगा टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स नेशनल फ्लैग्स, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट नेशनल एंथम। आप सभी समझते हैं इसका मतलब क्या है। हमें अपने देश के संविधान को मानना होगा, ये हमारा कर्तव्य होगा। हमें अपने आइडियल्स को, अपने संस्थाओं को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अपने राष्ट्रीय गान को सम्मान देना होगा, रिस्पेक्ट देनी होगी। और हमें to cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect sovereignty, unity, and integrity of this nation India, to defend country and render national service when called upon to do so, to provide harmony and a spirit of brotherhood amongst all people of this country, Bharat India.
transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities to renounce practice derogatory to dignity of women, to value and preserve rich heritage of our culture, to protect and improve natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. Who is a parent or guardian to provide opportunity for education of child or as case may be ward between age of 6 and 14 years, and then we know constitution of Bharat India. Do we know about structural power of constitution of India Bharat as given below under title of preamble of constitution of India? We people of Bharat India having solemnly resolved to constitute India Bharat into a sovereign socialist secular democratic republic to secure to its all its citizens, justice, which is social, economic, and political. All. It's not simple judiciary here, social, economic, and political justice, and in liberties, liberties of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation. You and I get up for real quality. You and I get up for reliable coordination. Everyone stops sleeping in hours because we have been sleeping. Quality and coordination be my and everybody's friend because I and others cannot satisfactorily work in profession without you both domains, domain 1 being real quality and domain 2 being real coordination. We are all friends together for all others. Demanded quality, you cannot leave me because you are my destiny and nation's destiny as well as others may not. That is what quality demands. But engineers shall have to handle you both domains successfully without causing any problem. We require to establish both domains permanently and engineering professions and also other walks of life have active quality performing in applications and quality in safety, health, and environment sufficiently. Real quality engineering and real coordination engineering. That is why I say in general and then Constitution of Bharat, which says something, it says union and its territory, which defines name of this country, Bharat and India, and what is citizenship, then fundamental rights as I talked about we have to take, and also then we have many other chapters like rights to freedom, rights against exploitation, likewise, many rights are there. And I discussed last time about Article 51A. This time also I discussed, which has said, and then we have to think about fundamental duties. As I said, Article 51A gives that just a narrative, and then we have to say what is union. We call union. What does it mean? In this, we have president of this country, then we have executive power of a union, and we have election of president, and we have you know electoral manner of electoral of president, how president election shall be done, term of office of president, and likewise qualification for election as president, and then we have other contents. Various contents are there. I am interested in Article 74 as I discussed last time. Council of Ministers. Council of Ministers to aid and advise presidents, and also then have to discuss and about Parliament. Well, now today we have to go to another article, and that is very important one.
And this 300 something, I assume it should be 300 something if I remember rightly, and that should be, I think it should be elections. It is related to elections. I understand exactly if I understand what that. This is trade commercial, and maybe I'm wrong. Services under this, and terminals, elections. Yes, this is part 15 of this constitution. Elections, which is article 324 to 329. In article 34 to 324 is superintendent's direction and control on elections to be vested in election commission. And likewise there is, and this is 197 190 page in this article 324 I like to move to, which is very very significant for me and for you everyone to understand. So this is what we are talking of, because there can be no assumptions. Facts should be considered, and that's what I say. What are facts? We have to see that. What are facts? फैक्ट्स क्या हैं? वास्तविकता जानना हमारा हक है, हमको जानना चाहिए, और अगर हम उसको नहीं जानते तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहला राइट हमारा ये है। सो वी हैव हियर article 300, let me reach that one. That is very important article 320. Actual is here now. Let me reach a little farther, fast, and likewise we can say, I think 324 it is coming now, and it is elections. Yes, I got this. 324. What does it state? Superintendent's direction and control of preparation of electoral rolls for and conduct of all elections to parliament and to legislature of every state, and of elections to offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in commission, referred to in this constitution as election commission. That's major point. Election commission shall consist of chief election commissioner, etc. So I'm leaving this. Then we can say, before each general election, this is number 4 in this. Before each general election, House of People, and to legislature assembly of each state, and before first general election, and thereafter before each final election to legislature council, if each state having such council, president may also appoint after consultation with the election commission, which regional commissioners as he may consider fit likewise. So we go to article here. It is that chief election commissioner not be removed. Okay, president or governor. Yes, it is article 325. That is, there shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to House of Legislature of a state, and no person shall be ineligible for inclusion in whatever such roll. That is important point. You understand what I mean? There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to House of Legislature of a state, and no person shall be ineligible for inclusion in whatever such role or claim to be included in whatever special electoral roll for such constituency on grounds only on religion, race, caste, sex, or whatever of them basis. Election of House of People, Lok Sabha, I mean to say, elections to House of People and to Legislative Assembly of every state shall be on basis of adult suffrage. Adult suffrage, I repeat, elections to House of People, that is Lok Sabha, and to legislative assemblies, being Vidhan Sabha, of every state shall be on basis of adult suffrage. That is to say, every person who is a citizen of this country, Bharat India, and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under law made by appropriate legislature, and is not otherwise disqualified under this constitution or whatever law, any law made by appropriate legislature
on ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at whatever such election. Subject to provisions of Constitution, Parliament may from time to time by law make provisions with respect to all matters relating to or in connection with elections to House, either House of Parliament or likewise state assemblies. Then another article is 328, subject to provisions of this Constitution, and insofar as provisions in that behalf is not made by Parliament, legislature of a state may from time to time make such provisions. So that's another one. And what do you say? Validity of any law relating to delimitation, etc., is given, and that's what I say. It is clearly defined in here. It clearly defines what we are, where do we stand, and that's what I need to say. I've taken a lot of time in this, but doesn't matter. Whatever we have to speak, it should be in clear terms. We cannot take just chance or by chance or this time I forgot to tell you or this and that. So what I try to say, as I discussed last time in Article 74, and now this time in Article 24 to 329, but all these articles, what do they say? Do we know? Means, do we know in general? Do then say our people of this country know this, or does voter know this? That point is very important. When I say voter, means topmost position in this country, though it is common. Voter is only valuable at time of poll, but voter is higher than all governments in this country. वोटर इज हायर देन एवरीबॉडी. वोटर हमारा बहुत पावरफुल है. वोटर हमारा बहुत शक्तिशाली है इस देश का. वोटर हमारा जो है उससे पावरफुल कोई भी नहीं. लेकिन ये बात हम समझेंगे नहीं, क्योंकि कोई समझाने देना भी नहीं चाहता. देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी, जो ये समझाने की कोशिश करे कि वोट का मतलब क्या है, वोटर की ताकत शक्ति क्या है. और कोई भी प्रेस वाला, कोई भी टेलीविज़न जर्नलिस्ट, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं आता है जिससे इन बातों को समझाया जा सके. हमारा संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से नागरिक का धार्मिक डॉक्यूमेंट. धर्म का मतलब नहीं है, नागरिक धर्म. नागरिक धर्म क्या है? नागरिक का मतलब सिटीजन से है, और सिटीजन का कर्तव्य क्या है, तो आर्टिकल 51A में हमने देख लिया. We have gone through that in Article 51A. How we have to get privileges to have PM, that also we have seen in Article 74. 74वां आर्टिकल संविधान का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को डिफाइन किया गया है एक इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि एक पार्ट ऑफ एक स्मॉल बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिव वन, उसका एक हिस्सा. इतना भी हम अगर नहीं समझते तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते. और चुनाव के बारे में जो मैंने बताया कि चुनाव का मतलब क्या है, चुनाव का मतलब MP को चुनना है, MLA को चुनना है, या किसी के कहने पे हमको प्राइम मिनिस्टर को चुनना है. ये बात बहुत बड़ी गंभीर, जितनी बार बता दूं उतनी बार कम लगती है. वी हैव टू बी वेरी क्लेवर सिटीजन. Everybody has to be smart. It is true that vote power has been given to adult franchise, you can say adult suffrage, which adult means 18 years and above. Now, what do you expect 18 years person? To an extent, our nature, our country, our future are related to. A small person, 18 years age, is that enough to decide about future of country? If you talk to young people, you shall find that destiny of young people is just to get a job, just to get some assignment, so that that person after education can earn something. That is first point. But more than assignment is one part, job is one part, that is also very important. It is also very significant from survival viewpoint, from meeting of life both ends, and struggle in life to be limited. But that is only one point of many points. Nation points have got,
many levels: how to live, how to survive, how to move, how to develop, how to have education, how to have health, how to have welfare state benefits. First of all, we have written so much in this constitution which everybody cannot understand, but if you go to preambles, we can understand everything what this constitution is. It says justice, it says equality, it says so many points, liberties. So we have justice system defined, we have liberty system defined, and we can say we have whatever else you can say, equality and opportunity, but these are only on papers. To what extent we have got it, we have achieved, that is to be seen. हमें देखना होगा हम क्या बातें कर रहे हैं। हमें ये भी देखना होगा कि हमारी पब्लिक को हमने कितना एजुकेट किया है। हम नहीं करेंगे क्योंकि हम राजनीति वाले हैं। राजनीति वाले पब्लिक को एजुकेट नहीं कर सकते। वो तो सब यही चाहते हैं कि पब्लिक बुद्धू बनी रहे, बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू। लेकिन वो ये नहीं जानते बुद्धू भी बनना आसान नहीं है आज की तारीख में, बुद्धू में भी दिमाग हो सकता है। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ना मैं किसी लीडर के नाम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लीडर है, लीड कर सकता है देश को तो लीड करे, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपनी पार्टी की ओरिएंटेशन रख के सिर्फ आगे बढ़ता है तो मैं नहीं समझता कि वो एक देश का लीडर हो सकता है। हम कहते हैं हमने सरकार चुननी है, सब यही कहते हैं ये सरकार चुननी है। सच बात तो यह है कि आपने सरकार चुननी ही नहीं है, सरकार तो ऑटोमेटिक बनती है। आपने जिसको चुनना है वो आपका सेवक आपके लिए हो, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हो, तब तो बात बनती है। और उसने अपनी मस्ती मारनी है, अपनी पार्टी के लिए जीना है, अपनी पार्टी को सब कुछ समझना है, तो वो मेरा कहाँ हुआ। कोई भी नेता जिसको हम कहते हैं, कोई भी जिसको हमने चुनना है, हम वो नेता भी कहते हैं उसको, भाई ये नेताजी आ गए, एमपी साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए। अच्छी बात है, आप नेता बनिए, नेता बनाकर ही तो हमने आपको भेजा है, हमें लीड कीजिए आप। You are required to lead me because I am citizen of this country. You are also citizen of this country, but in addition to that, you have been given public mandate for certain purpose of assemblies, legislatures, etc., etc. It is to be made clear that your job is that, and if you are not able to do that job, I least bother about your political party and I least bother about affiliations. Your affiliation should be towards nation. Your affiliation should be towards citizens of this country. That is main requirement. You may be prime minister of this country, but you are first citizen of this country, and you have to understand, you have to realize your responsibilities. Forget your party, forget everybody. You should be neutral towards others. But you do not become neutral. That point is pinching one. That point kills me. That point doesn't give me way to get solution. After all, what for we elect? Just think of, क्यों चुनते हैं हम, हमें क्या मिलता है। आप कहेंगे जी देश को चलाना है, सरकार बनानी है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो सब तो ठीक है, वो तो कोई ना कोई बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा। लेकिन मैं ये ना भूलूं कि मेरे 5 साल के लिए एक बार जब मैं वोट दे देता हूँ तो 5 साल के लिए हाथ बन जाते हैं। मेरे पास क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती कि कौन किसने पानी में है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या समझ रहा है। हाथ जोड़ने से ही मेरा अधिकार मिल जाता है क्या? कोई वोट मांगने आए और ऐसे करके चला जाए, इसका मतलब क्या है? आप जरा सोचिए, नागरिक हैं आप इस देश के, क्या इतना करना काफ़ी है, या आपने कोई माला पहना दी, कुछ कर दिया, ऐसे करके खड़े हो गए? मतलब मुझे वोट दीजिए। एक ऐसा ऐसा गलत फहमी का शिकार बना दिया है हमारे देश की पब्लिक को, जो समझती नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बस यही बात का दुख है। पहले मैं संविधान को बंद कर दूं क्योंकि कंप्यूटर पे लोड पड़ा और संविधान की बात तो जितनी करनी थी मैंने कर दी। आज के लिए काफ़ी है उतना।
अब हम आगे बात कर रहे हैं। संविधान तो सर्वोपरि है, इस बात को तो इस देश में कोई मना नहीं कर सकता। संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, सारे विधान जिसमें से बने, जिसकी शक्ति से जितने एक्ट पास हों, इसकी शक्ति से जिन जिन को भला हो। मैं सब लोगों के भले की बात कर रहा हूँ, नारे नहीं लगा रहे हम लोग, हम नारे लगाएंगे भी नहीं। ये काम राजनीति वालों पे छोड़ो, क्योंकि वो तो पैदा ही नारे लगाने के लिए हुए हैं, काम करने के लिए तो पैदा हुए नहीं वो। और हमें उनकी उस फालतू की पॉलिटिकल बकवास में जाना भी नहीं है। हमें तो ये देखना है कि संविधान हमारे को क्या कहता है। What does my constitution, or you can say my national political document, national holistic document, I should say, rather than that, I consider this document, this Constitution of India, Bharat document, a holy book for my country. आप इस चीज़ को माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो इसको एक देश का ग्रंथ मानता हूँ। देश की ऐसी ऐसी लिखी हुई किताब जिसमें हम क्या करें, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, हम किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाएं, उसको समझना होगा। हम जब तक ये नहीं समझ सकते, हम क्वालिटी नहीं ले सकते। यहाँ क्वेश्चन है हमारे सिटीजन की क्वालिटी का, क्योंकि अगर सिटीजन क्वालिटी वाला हो जाएगा, सिटीजन क्वालिटी बन जाएगी, तो अपने आप को सबको क्वालिटी वाला बना देगा। जब तक हमारा सिटीजन, हमारे देश का नागरिक क्वालिटी वाला नहीं है, हमारे देश में क्वालिटी नहीं आ सकती। मेक इट ए फिट इन योर माइंड, मेक इट accommodated in your mind that citizens' quality is top significant. If citizens' quality is not developed, there is no meaning of vote. It's just vote, not meaningful vote. हमें पहले क्वालिटी को, वोट की क्वालिटी जरूरी है। वोट की क्वालिटी हर क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगी। वॉट एवर क्वालिटी ऑफ वोटर यू आर, योर वोट क्वालिटी shall impact this nature, is impact this nature. That is very important. It's not simply that I done my job, I am democratic, and I have done my job, let them take care of rest. No, you cannot say this. I cannot say this. इस भ्रम जाल से बाहर आना होगा जो हमारे को नेता ने, हमारी क्वालिटी जो सोच की थी, हमारी क्वालिटी जो देश को आगे बढ़ाने की सोच की थी, उसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया। नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा? सिटीजन तो कोशिश करते नहीं है सीखने की कुछ भी, फिर कैसे होगा? दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन ही हेल्प change nation to get higher degree of quality? Is that not a requirement, you think? मेरे हिसाब से तो ये रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यकता है कि अगर हमारा देश का सिटीजन सिटीजन ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो उसके वोट का भी पर्पस ख़त्म हो जाता है। बेशक पर्पस ख़त्म हो जाए, लेकिन वोट तो होगा ही, मत तो देखा ही जाएगा। मेरा तात्पर्य कहने का ये है, अगर हमको क्वालिटी लाना है, इफ़ वी हैव टू अचीव क्वालिटी, we should have certain system. We have system, but that system has been failed to be explained to. Completely drastic failure of that system because of operatives do not want to understand, or intentionally they do not want that people of this country should know about this country and other countries. That point is very important. How can they understand? How can I understand about how to equip citizens with quality? And that's what I say. We have to be very clear in this regard. हम अगर नहीं समझते तो समझ भी नहीं सकते। ये उसी तरह से है कि आप किसी देश में जाएं, आप वहाँ की भाषा नहीं जानते, तो आप सोचेंगे कि मैं किताब से सीख लूँगा, कहीं और से सीख लूँगा, आप फिर भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो लाइब्रेरी में जाने से नहीं आएगी आपको,
आपको उसको समझने से आएगी, उसको करने से आएगी। बिना किए आप पढ़ भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू अचीव क्वालिटी इन लाइफ, and quality does not mean quality control alone, but quality as a whole. Quality as a whole. That point is very much significant. And if you don't understand that point, we cannot do anything in quality level. Quality means totality of product. If product quantity exists but quality does not exist, then I cannot say this product is in total. This is defective product. This is not rightly produced product, and that defect is defect. We have to find what defect is there, and then we have to take further actions. My dear friends, my dear countrymen, civil attitude is very significant. If we don't have civility attitude, we cannot do everything. We cannot do anything. हम कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन रखें, लेकिन लोग नहीं चाहते उसको। कुछ लोग, वैसे तो जनता सारी चाहती है। जितना समय बीत रहा है लोग पढ़ते हैं, कभी कभी तो पढ़ते सही, और जिनको इंटरेस्ट आता है वो तो सारा सारा दिन पुस्तकालय में जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं एक्साइट नहीं होना चाहता, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, क्योंकि क्या जरूरत पड़ी है चिल्लाने की जब बात सोच समझ के की जा सकती। देश देश है, मेरा देश, और हर व्यक्ति कहेगा मेरा देश, हमारा देश, हम सबका देश। और साथ में ये देश ही नहीं, हम तो ये भी कहेंगे मेरा विश्व, हमारा विश्व, सबका विश्व, क्योंकि विश्व ही तो देश है। हमने इतना हिस्सा कवर किया, ये हमारा देश हुआ। इससे ज़्यादा कवर कर ले तो भी हमारा हो जाता। देश क्या है, देश कैसे चलना है, कैसे चलाना है, किसने चलाना है, किसके बारे में सोचना है, ये सब बातें हम कहाँ सोचते हैं। बस वही बात जो आँख के सामने है उसको देख लो और उसको वोट दे दो। इसका मतलब मैं अपने वोट की बेइज्जती करता हूँ। संविधान ने जो मुझे हक दिया, जो शक्ति दी, मैं उसकी निरर्थक कर देता हूँ उसकी सक्सेस को, ये क्या कि ये ही सही है देश के लिए। कई बार मुझे सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश के, किसी भी केवल के, उनको देश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जाके खुद ही तो देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्वालिटी अचीव करने की। अगर हम क्वालिटी नहीं अचीव कर सकते तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और हमारे वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जितने भी हमारे कैंडिडेट आते हैं बड़े से बड़ी सीट के लिए, उनको समझ आना चाहिए कि वोटर क्या चाहता है। वोटर कांस्टेंट एटीट्यूड चाहता है, वोटर टेंस ए कलेक्शन ऑफ वाटर चाहता है। ये चीज़ हम जब तक नहीं समझेंगे, हम कहते रहें हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आने वाला आपका। वोट को समझिए क्वालिटी लाने के लिए, और अपनी लाइफ में क्वालिटी लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी नहीं लाएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो भी आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ के, चाहे एक बार गिरे आप, दो बार गिरे, फिर भी चलते रहना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Why should I not speak to people of this country and not to government of this country? I can speak, I can analyze, I can understand. मैं समझ सकता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, और आप भी समझेंगे। समझना तो आप भी चाहते हैं, बस इनिशिएटिव की बात है। आप इनिशिएशन नहीं करना चाहते। दूसरे व्यक्ति आपके सामने चार चार पाँच पाँच बैठते हैं, आपसे एसोसिएट होते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता ही टांग अड़ाते हैं बीच में।
गुत्थुक होता है ये बात कहते हुए कि वो टांग अड़ाते हैं। सच बात तो ये है कि वो टांग अड़ाते हैं। जब हमारे देश में ये सब होता है, कोई भी नेता नहीं चाहता कि पब्लिक को सारी बातें पता होनी चाहिए। पब्लिक को अपने आप जीने दो, यही वो चाहते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो, यही वो चाहते हैं। और यदि हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो भाई साहब जी, मैं इनके पीछे अपना टैक्स का पैसा क्यों दूँ? अधिकार और वोट अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आपका कर्तव्य है कि अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमें ये ना सोचें कि कौन होगा चेहरा। चेहरे तो बहुत आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है, सही आदमी कौन होगा, वो देखना आवश्यक है। ये कहना कि मैं हाथ का हूँ या मैं किसी और का हूँ, दीवे का हूँ, इस कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारे टैक्स के पैसे से करेंगे, हम पे एहसान नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, बस बातें करेंगे। जो करने वाले लोग होते हैं वो बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। सो माय डियर क्वालिटी वोट पर्सन, आपको अपनी शक्ति को समझना होगा। नींद क्या कहती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नींद तो ऐसे कहती ही रहती है। ज़्यादा बात करने से भी कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी क्वालिटी पहले बनाइए। आप चाहे ठेला भी चलाते हों, जो कि गलत नहीं है, वो भी सही है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो, आपको सोचना तो होगा। और यदि आप नहीं सोचते तो बात तो बनने वाली नहीं है। बात तो बनने वाली नहीं है, इस बात को भी समझना होगा। क्वालिटी इज ए मस्ट। Every citizen must have quality. If you don't have quality, then you are not good citizen, I would say. Here, quality is not related to material, it is related to your way of thinking. Don't think that who shall be your prime minister. Don't think that who shall run this country. Your job is not that. Even if your job is that, nothing is controlled by you. You cannot do anything. आपके हाथ में तो है ही नहीं, और उसी में आप अपना टाइम खराब करते हैं जो आपके हाथ में है नहीं। इस देश में सिटीजन को क्वालिटी वाला होना होगा। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के सिटीजन को शिक्षित होना होगा, एजुकेटेड होना होगा, कैलिबर वाला होना होगा, अपने हाथ से काम करने वाला पैदा होना होगा, सोच समझने वाला होगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आपका वोट एक गंवार आदमी देकर आया, मतलब ये हुआ ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब आप वोट देने जा रहे हैं, किसी को भी आप दे के आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो आप एक गंवार की हैसियत से वोट दे के आए हैं, क्योंकि ना तो आपको वोट का मतलब पता है, ना आपने सोचना चाहा। बस जी मैं तो ऐसे ही करता रहा हूँ, ऐसे ही दूंगा। बहुत से लोग कह देते हैं, अजी हम तो कांग्रेस के हैं ज़माने से, कांग्रेस को देते आए हैं, हम तो कांग्रेस को देंगे। हम बीजेपी वाले हैं, हम जनसंघी, हम तो उनको देंगे। हम कम्युनिस्ट हैं तो उनको। इन बातों से कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या आपके ऊपर बाइंडिंग है जो आप ऐसा सोच रहे हैं? आप अच्छे आदमी को तो वोट देंगे नहीं, वो क्या किसी भी पार्टी का ना हो। यही प्रॉब्लम हमारे देश की है। क्वालिटी वोटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है नहीं। क्वालिटी इम्पोर्टेंट हमारे देश में है नहीं। बस यही बात थोड़ी सी अखर जाती है। अखरनी नहीं चाहिए, अखर गई तो गई। इसलिए माय फ्रेंड्स, हैव क्वालिटी। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो बहुत चलने वाला भी नहीं है, कोई बात नहीं, मत चले। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ना तो हम देश के नेता बनेंगे, ना देश के प्रोपराइटर बनेंगे, ना देश की कुछ बनेंगे। हम तो सोचते हैं कि हमारा देश सही लोगों द्वारा चलाया जाए, क्योंकि चलाना तो पब्लिक ने है, नेताओं ने को चलाना नहीं, हमने चलाना है। ये बात हमको अच्छी तरह से सोचनी चाहिए। मैं किसी का स्लेव नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा का स्लेव हूँ। ये बात भी समझनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। क्वालिटी डेवलप करना वोटर का काम है। जैसा उसको सिखाया जाएगा माँ बाप द्वारा, दोस्तों द्वारा, अध्यापकों द्वारा, वैसा ही कंडक्ट करेगा।
और सच तो ये है कि ये सीट चाहे किसी की भी हो, किसी के भी हाथ में हो, आप कितने भी लिखते रहे कि हम तुमसे जब जाओगे कुछ करने इकट्ठे होकर तो हम आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये सब गलत बात है। हमें सोचना होगा अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए। और इस बात को लेकर आज मैं यही विराम लगाता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत। आप सबका धन्यवाद। प्लीज़ सोचिए क्वालिटी ऑफ वोट के बारे में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जय भारत। धन्यवाद सभी का।